हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनसेन गेमर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सेटअप करेंगे विलेटर लुडासी के बिल्कुल नए ही अपडेट को। हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ नया होने वाला है और ये भी जानेंगे कि इसके लिए बेस्ट सेटिंग्स कौन सी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक से का वन ऑफ द बेस्ट एमुलेटर माना जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में। तो इसका सेटअप वीडियो हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेटिंग्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस रखा है बॉक्स 64 प्रीसेट का। और तो और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद कंटेनर की सेटिंग्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने स्क्रीन साइज़ का जो रेजोल्यूशन है वो अपने मोबाइल के हिसाब से रखा है। अगर आपका कोई लो एंड डिवाइस है तो आप इसे यहाँ से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद वाइन वर्जन प्रोटॉन 9.0 आर्म 64 ही सबसे ज़्यादा बेस्ट अभी माना जाता है। ठीक है, इसमें एक खास बात ये है कि इसमें सारे मतलब जितने भी ग्राफिक ड्राइवर हैं और डीएक्सवी के रैपर वगैरह हैं, ये सारे एक साथ दिए हुए रहते हैं। ठीक है, एक साथ, जैसे इसमें टर्निप ड्राइवर भी है, वल्कन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ से छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से 100 FPS कर देंगे, जिससे आपका FPS शो होने लग जाएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। उसके बाद एडवांस सेक्शन में जाएंगे तो बॉक्स 64 का जो प्रीसेट है या वर्जन है वो 0.3.7 रखा हूँ मैंने। और बॉक्स 64 प्रीसेट को परफॉर्मेंस में रख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको अग्रेसिव कर दिया हूँ और ये जो है टीएसओ, इसे मैं फास्टेस्ट पे सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद जितने सीपीयूज आपको इनेबल दिख रहे हैं उतने ही आपको यहाँ से इनेबल करने हैं। तो उसके बाद मैं कंटेनर ओपन कर लेता हूँ और जो गेम मैं इसमें ट्राई करने जा रहा हूँ वो है WWE 2K16। और इसमें एक खास बात ये होने वाली है कि मैं बिल्कुल भी उसके सेटिंग्स को छेड़ूंगा नहीं। यहाँ से मैं इसे शॉर्टकट बना देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट इसका बना रखा है और रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं एज इट इज़ DXV के रैपर और फिटरनी ड्राइवर, ये है अपना। ठीक है, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाके मैं गेम पैड सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से कैसे करते हैं बताता हूँ। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअल गेम पैड, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने गेम को ओपन करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया हूँ, इसमें जितने भी मतलब जो सेटिंग्स होते हैं उसको छेड़ा नहीं हूँ। पूरा हाई ग्राफिक्स, मतलब जितना इसका गेम रेजोल्यूशन देता है उसमें हम लोग ट्राई करने जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बिल्कुल खतरनाक होने वाला है ये। और हाँ, आपको इसमें और भी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। पहले मैं क्या करूँगा, इसमें पहले आपको ये दिखाऊंगा कि एक मैच खेल के देखूंगा जिसमें मैं पूरा हाई ग्राफिक्स के साथ खेलने जाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, एफपीएस थोड़ा सा अपने को कम मिलेगा। ठीक है, उसमें हम उसमें क्या होगा, हम लोग को जो एफपीएस है थोड़ा कम मिलेगा। बट उसके बाद जब मैं गेम प्ले करूँगा लो सेटिंग्स में, उसमें हमको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन में आप जा सकते हैं और यहाँ से आप सिंपली एक्स दबाएंगे तो आपके सारे सुपरस्टार्स खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितने भी लेजेंडरी सुपरस्टार्स हैं हमारे इनेबल हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो ग्राफिक सेटिंग्स आप देखेंगे तो मैक्स पे है हम लोग का, टेक्सचर क्वालिटी हाई पे, 100% ऑडियंस है, सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट पे है। तो अब मैं इसमें गेम खेल के देखूंगा तो कितना एफपीएस मेरे को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश मैं ऑफ रख देता हूँ। कंटिन्यू एम्ब्रोस को ले लेता हूँ। ठीक है, शायद रॉनेट भी खिला रहा हूँ, हम लोग खेलने वाले हैं तो इसमें एफपीएस चेक करेंगे हम लोग खेलते हुए। ठीक है, एफपीएस वगैरह यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, बहुत ही खतरनाक लेवल का। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में Seth मैं Rollins रिकॉर्डिंग looks भी कर रहा हूँ। focused here tonight, मैं King. रिकॉर्डिंग Oh, भी look कर रहा हूँ out. तो भी सेम मेरे को 43 45 35 एफपीएस ऐसे मेरे को दिख रहा है। ठीक है, बस कुछ शटर मार रहा है रिकॉर्डिंग के कारण। अदरवाइज आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे 44 45 एफपीएस लगातार मिलता है दोस्तों। और मेरा डिवाइस भी इसमें हीट वगैरह नहीं हो रहा फिलहाल तो। ठीक है If ना, they haven't done it तो yet, आप check देखिए out कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मेरा गेम यहाँ पे WWE.com. चलने लग रहा है। You'll find updates and ठीक है, blogs from अब all मैं your आपको favorite थोड़ी देर में इसकी वो superstars. सेटिंग Yeah, don't दिखाने forget वाला to हूँ check us out on जिसमें Twitter. अपन लोग क्या It's at करेंगे Jerry Lawler कि and इसे Michael Cole. Right, Michael Cole? Yeah, that's original. You know, I don't know if there's a book large enough to contain a ये आप list of देख all of देख Seth चुके हैं कि Rollins' मेरा 44 unbelievable 45 moves. एफपीएस मिल रहा You're है। अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं लोएस्ट सेटिंग्स आपको करके दिखाऊंगा। तो लोएस्ट सेटिंग्स में हमको कितना एफपीएस मिलता है उसे भी हम ज़रा देख लें। ठीक है, तो मैं ऑप्शन में चला जाता हूँ। ऑप्शन में जाने के बाद ग्राफिक सेटिंग्स में जाने के बाद मैं वी सिंक ऑफ कर देता हूँ, इसे भी ऑफ कर देता हूँ। इसे मैं कर दूंगा ऑफ, इसको कर दूंगा लो, इससे
इसको मैं कर दूंगा लगभग 20 के राउंड कर दूंगा दोस्तों। ऑडियंस डेंसिटी हम लोग 20 रखेंगे। ये डेप्थ ऑफ फील्ड और मोशन ब्लर सबको बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा गेम और थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखते हैं कि हमको कितने FPS इसमें मिल पाते हैं। और तो और मैं आप एक बात याद रखें कि रिकॉर्डिंग भी प्लस मेरी चालू है। तो ऐसा अभी तक से तो मैंने एमुलेटर नहीं देखा जो रिकॉर्डिंग के साथ भी आपको बहुत बढ़िया जो FPS प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अपना गेम हमसे लॉन्च हो गया और अभी मेरे को 40 से 50 प्लस FPS तक से ही दे पा रहा है। ठीक है, Steve Austin making his statement as we speak. 50 के पार भी चले जाता है। तो मैं बोलूँगा कि आपको इस एमुलेटर को जरूर ट्राई करना चाहिए। This guy's a machine. ठीक है, सॉरी एमुलेटर है और मैं गेम प्ले करता हूँ, आप इस गेम प्ले को एंजॉय करें। Doing a great job of avoiding any serious offense. That'll go a long way as this one progresses. Seth Rollins finds a way out. You know, I don't know if there's a book large enough to contain a list of all of Seth Rollins' unbelievable moves. You're talking about his somersault plancha, diving high knee from the top rope, standing shooting star press, a blockbuster. Rollins can do anything he wants to an opponent in that ring. Well, on the topic of Seth Rollins here, tell us your thoughts. Well, look, a win tonight is huge. I mean, just think about this. The title's not on the line, but the momentum you're riding after a win like that is huge. Oh, and a terrific reversal by Steve Austin. Whoa, I didn't see that coming. Yeah, that's because Seth Rollins is just so quick, Cole. You know, we could go on and on listing all of Seth Rollins' astonishing moves. And let's remember, Rollins tags opponent with an enziguri that'll knock your head right off your body. Man, oh man, did he take a wild swing with that one. You're right. That was wild indeed. Good thing we're over here. And Rollins with the reversal. 4. Back into the ring now. Yeah, this is good. This is where the action needs to be. 5. Now back to the ring. If there's one place you don't want to get pummeled, it's your face. No kidding. Whew, that's hurting me. He's showing no signs of letting up. Not a lot of spring left in his step right now. Seth Rollins' career began as one of the most respected grapplers on the independent scene. You have to think that's it. Uh-oh, he's in position, ready to strike. Whoa, whoa! Stone Cold Stunner. Steve Austin's done it. What a stunner. See ya, wouldn't want to be ya. He can end it here. Right now. These superstars looking for a victory, looking to build momentum. You're right about that. Momentum is so important in a match like this. Steve Austin doing a great job of turning that around. I think I saw a tooth fly out. He's got him. That strike hit a spot. There's no way he could have avoided that blow. Look past the ring at the thousands and thousands of WWE fans in attendance. Each and every one of them are having a great time tonight. Oh, you're right about that. You always have a great time when you attend a WWE event live. Just like we are here tonight, this is wonderful. When he gets going like this, there are few better. Man, Seth Rollins, what offense! Come on, ref, get in there. What a ruthless act. That is not a position you want to be in at any point in this match or ever.
At this point, you think he'd have that move well scouted. What an assault. This type of attack takes things to a completely different level and leaves your opponent agonizing to breathe. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now. Uh-oh, there's the elbow drop. The elbow drop has hit again. We know what's coming here. A perfect Stone Cold Stunner. Oh, there it is. What a maneuver. That's how you put away an opponent. Makes the cover. 1, 2, 3. You know, Rollins was one half of What a win. Man, he's got to feel great. Oh, those WWE competitors tore this. Here's your winner, Stone Cold Steve Austin. Big win for him here tonight. Now that's having a game plan and executing it to perfection. As we close the book on this match, I need to remind everybody just how big of a win this was. Simply amazing.